hope we will be, by the end of this session, we will be learning that how we can make our stock market experience into a simplified way. So today our topic is that stock trading simplified, and I want to welcome Ms. Shrestha Chopra, and I'm extremely honored to have right now to guide us how we can invest and how stock trading and our stock trading experience can be simplified in a way using the tips and tricks. Because if I would love to introduce Shrestha, that Shrestha has a 15 years of experience and into technical analysis, and she's basically a technical analyst, equity expert, and a popular stock market coach. So she has been giving a lot of inputs on stock market. And if you talk about academically, Miss Shrestha is a mathematic honors and an MBA from IMI Belgium. And she has been she has been in technical analysis, as I told you, technical analysis and research for close to 15 years, and has been associated with top brands like Bombay Stock Exchange, ICICI, and IIFM, and BLB, etc. So Ms. Shrestha is an active member of the Association of Technical Analysts, and she's known for her work in this domain basically. She also teaches quant, technical analysis subjects, and she also teaches CFA financial analyst program of the CFA Institute in USA. So she's an alumnus of Modern School Delhi. She stays in East Delhi, sorry, and associated with research desk of many brokerage houses. So today, I want to welcome Ms. Shrestha, and I hope we will be getting a lot of inputs how we should do trading, how should we make our money in stock market, how can we get maximum return on our investment. So Shrestha, welcome to this beautiful evening today, and I'm extremely honored to have you in our webinar so that you can guide us in a better way. Thank you so much, Parul, for being so modest. Thank you. I shall take from here. Good afternoon, yes, everyone. Hope all of you are having a good afternoon. Though, you must be having plans with your family, your friends. It's a Sunday, sunny, bright Sunday, and little windy also. And suddenly this webinar came, you must have given a thought whether to attend or not to attend. But, I can assure you, this is not going to be a boring seminar. Something or the other would, add on to your life, as well as for few, it would be a life-changing webinar also. So before I start with this, I would like to talk about, there is something known as power of compounding. Power of compounding is a term, before I'm going to stock market, I'm just talking about this power of compounding just to explain something, the reality, what we all are facing. So power of compounding is growing your wealth exponentially. Exponentially का मतलब है कि आपका जो asset है, you get interest on it, and then that is again calculated for your profit. So if I talk about government initiatives, Sukanya Samriddhi Yojana is something which is initiated by government and can give the maximum return out of all these yojanas and all the instruments which are available in the financial market. It gives the highest return, which is like 7.6%. But as the name says, Sukanya Samriddhi account, so it can only be beneficial to ones who are blessed with the daughters, because once you open this account, it can be only open if you have a little girl in your house, and it gives the 7.6% return. But supposedly if someone doesn't have a daughter, or not married right now, so or your daughter is above 10 years of age, so how to grow your money exponentially and how to get this return, which is 7.6%, and it's just a dream for all of us to get this 7.6%, because in India now the returns on even FD has reduced to 5 or say 4%, which was earlier like 10%. So how to grow your return, how to get a better investment? And I can assure you the stock market is the only platform which gives you this compounded return over the years. And I would
take you through my slides and through my webinar just to tell you, how easy it is once you know all the proper tools and techniques to park your funds and to increase your funds. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ व्हाई टू हैव these tools and techniques, what is the need to have these tools and techniques to trade? ट्रेडिंग तो बहुत इजी है, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, ट्रेडिंग इज सो इजी, नो? शेयर्स को बाय करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बट मुश्किल क्या है? टू बाय एट द राइट प्राइस एंड देन टू सेल एट द हायर प्राइस। मतलब आपने सस्ते में खरीदा और आपने महंगे में उसको बेचा, दैट इज द गेम ऑल अबाउट। एंड हाउ टू डू दिस? वी शुड बी इक्विप्ड विथ प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इट। सो आई वुड जस्ट गो थ्रू दिस, एंड आई वुड हेल्प यू ऑल टू नो हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम अपने फंड्स का खुद ध्यान रख सकते हैं तो हम अपने लिए बेटर रिटर्न्स निकाल सकते हैं, राइट? और अगर हमें आता ही नहीं है उनको निकालना, रिटर्न्स को हमें ग्रो करना ही नहीं आता, देन इट इज ऑफ नो यूज टू ट्रेड इन stock market and to play with this thing known as shares. So okay, how many of you, and even I would talk to girls over here, if you walk on road, taekwondo, would you feel more safe or not? This question is for basically girls, because nowadays walking on the roads is not that safe. And if you're walking on road and taekwondo, I think all the girls would feel very safe and can even go out in nights also with your friends, right? तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, अगर हमें राइट टूल्स एंड टेक्निक्स पता है, देन इट इज वेरी इजी टू वॉक अलोंग दी स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट हैज इट्स ओन स्टोरी एवरी डे। ओके, थैंक यू, आई गॉट द मैसेज। ओके, आई विल स्पीक इन हिंदी। तो अगर हमें टाइकोंडो पता है तो हम बिल्कुल स्ट्रांगली रोड पे चल सकते हैं, बट अगर नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज, मैं डॉग से भी, बिकॉज आई डोंट नो टाइकोंडो, तो मैं तो रोड पे निकलती हूँ तो मुझे डॉग से भी डर लगता है, ठीक है? तो बट हाँ, शेयर मार्केट आता है, ट्रेडिंग आता है, टूल्स टेक्निक्स आते हैं, तो डर नहीं लगता है, बिकॉज आई नो हाउ टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम स्टार्ट करें, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? Just a minute. I hope it is visible to all of you. Yes, ma'am, it is. ठीक है, तो स्टॉक मार्केट है क्या? Warren Buffett said many years ago, stock market is a device for transferring money from impatient to patient. मतलब जिसमें पेशेंस है कैन ओनली अर्न मनी, एंड जिसमें पेशेंस नहीं है कैन ओनली लूज मनी। सो इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप पेशेंटली बैठो और अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा रखो, यू कैन अर्न मनी। और अगर आपको अपनी टेक्निक पे भरोसा नहीं है, आप पेशेंटली वेट नहीं कर सकते हो, सम काइंड ऑफ ग्रीड कम्स इन यू, अगर थोड़ा सा भी लालच आ जाता है, वी टेंड टू लूज मनी। ओके, एंड I will talk about some of the myth about stock markets. Myth मतलब जो लोगों को लगता है और ऐसा है नहीं, एक तरह का इल्यूजन होता है हमारी आंखों के आगे कि स्टॉक मार्केट क्या क्या है, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट ये सब चीजें नहीं है। तो पहला क्या है? बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं, बिकॉज मेरा करियर इतने सालों का है, 14-15 साल का, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, एंड आई रियली फील बैड बिकॉज इट इज नॉट गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजी। रिसर्च मतलब हमें, if I'm a technical analyst, as Parul has already shared that I'm a technical analyst, तो जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं कम से कम रोज के 400-500 चार्ट्स देखती हूँ, उसमें से अच्छे चार्ट्स को निकालती हूँ, एंड देन आई ट्रेड इन दोस चार्ट्स। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क इवन आफ्टर द मार्केट आवर्स आल्सो। अगर मैं आप लोग को एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, so you would be surprised to know this chart, the left hand side chart is for Ultratech and right hand side is for Nifty. ये एक बिल्कुल recent chart है जिसमें dates भी mentioned है, अगर आप देखो, so sorry, हाँ, so dates are also mentioned। जिस दिन से अल्ट्राटेक ऊपर जाना शुरू हुआ उसी दिन से निफ्टी नीचे जाना शुरू हुआ, एंड आई फिगर्ड आउट अल्ट्राटेक, और मैंने अल्ट्राटेक को वहीं पे 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर का डेट है, 27 अक्टूबर से मैंने इसको खरीदना शुरू करा, और पूरा मार्केट गिर रहा था पर अल्ट्राटेक ही एक ऐसा शेयर था जो बढ़ रहा था। और ये मुझे कैसे मिला? हाउ डिड आई फाइंड इट आउट? आई फाइंड इट आउट थ्रू माई रिसर्च। जो मैं अपनी रिसर्च, जो टूल्स एंड टेक्निक्स इस पे लगाती हूँ, उससे मुझे अल्ट्राटेक मिला, एंड आई अर्न मनी। मैंने इसको सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा।
So this is all about research. This is all about study. It is not at all gambling. और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मिथ लोगों को क्या है, इट सेज पीपल से और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो क्या सोच के आते हैं कि बस आज मैंने 1 लाख रुपए लगाए और कल मैं इसको 5 लाख निकाल के बना के निकालूंगा. बट इट इज नॉट द रियलिटी. इट इज नॉट दैट इजी कि आप एक ही दिन में रिच और द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाओ. इट टेक्स टाइम. धीरे धीरे हमें रिसर्च करके वी इन्वेस्ट मनी एंड देन वी ग्रो आवर मनी. सो इट टेक्स टाइम एंड नथिंग कैन मेक यू रिच इन अ डे. कोई भी एक दिन में रिच नहीं बनता. इट इज अ स्टोरी ऑफ इयर्स एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, है ना. हम एक ही दिन में हम पैदा हुए, हम एक ही दिन में बड़े नहीं हो गए. हमें 18 साल लगते हैं एडल्ट बनने में. ऐसे ही अपना मनी ग्रो करने में हमें टाइम लगता है. एंड देन मल्टी बेगर, आप सबने नाम सुना होगा. पीपल से देयर इज समथिंग नोन एज मल्टी बेगर, कि मल्टी बेगर ढूंढो, पैसा लगाओ उसमें और रिच बन जाओ. बट मल्टी बेगर होता क्या? अच्छा, मल्टी बेगर इज, जो लोगों को समझ में आता है, वो एक ऐसा स्टॉक होता है जो बहुत ही सस्ता सा, जो एक आम जनता को समझ में आता है, एक बहुत ही सस्ता सा शेयर 4-5 रुपए का, और 10-15 दिन में वो 50-60-70-80 रुपए का बन जाए, उसको लोग मल्टी बेगर कहते हैं. बट मल्टी बेगर ढूंढना आसान नहीं होता है और हर कोई एकदम से मार्केट में एक्सपर्ट नहीं बनता. इट टेक्स टाइम. अगेन आई एम सेइंग इट रिक्वायर्स टूल्स एंड टेक्निक्स टू फाइंड आउट अ मल्टी बेगर. और क्या होता है, आप लोग एक दूसरे से सुनते हो और आप लोग मल्टी बेगर पिक करते हो, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने पैसा लगाया, सारा का सारा पैसा नीचे हो गया, क्योंकि आपने गलत टाइम पे एंट्री ली. अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्यूचर ग्रुप के जितने शेयर्स हैं, कुछ साल पहले तक वो मल्टी बेगर, दे वर एट अ चीपर प्राइस एंड पीपल स्टार्टेड रिकमेंडिंग टू बाय, कि मल्टी बेगर है, ये डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएंगे, आप इसमें पैसा लगाओ. और जब तक आम जनता ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाना शुरू करा, वो शेयर का प्राइस नीचे आना शुरू हो गया. तो अगर हमारे पास राइट टूल्स हैं, हमारे पास राइट स्ट्रैटेजी है मार्केट में एंटर होने की, एट द राइट टाइम वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी, वी कैन ग्रो आवर मनी एंड वी कैन नॉट बी फूल्ड. मतलब हम किसी से धोखा नहीं खा सकते. हम राइट टाइम पे पैसा लगाएंगे और उसको राइट टाइम पे विड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने फ्यूचर ग्रुप का नाम लिया. फ्यूचर ग्रुप वॉज अ मल्टी बेगर, बट नाउ अगेन इट इज अ मल्टी बेगर. मतलब ये बिल्कुल खुद ही लॉस्ट हो गया, तो आपको क्या रिटर्न देगा? आप लोग देखिए, ये चार्ट में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये 5 रुपए से शुरू हुआ था, 5 रुपए से बढ़ते बढ़ते ये 75 रुपए क्या 80 रुपए टच करा, एंड देन इट फेल डाउन अगेन टू 7 रुपीज. तो आप इमेजिन करो, अगर किसी ने सुन के, किसी ने इसको 70 रुपए 75 रुपए पे खरीद लिया, ये सोच के कि मैं तो इससे बहुत रिच बन जाऊंगा, मेरे मेरे 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाएंगे 10 साल में, 5 साल में, वट एवर. पर हुआ क्या, ये तो 80 रुपए अब कितने बन गए? 7 रुपए बन गए, और आपका सारा का सारा पैसा चला गया. इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें यही नहीं पता था हमें कहाँ इसमें एंटर होना है. व्हाट इज द राइट टाइम, राइट लेवल ऑफ प्राइस टू एंटर इनटू दिस शेयर. So therefore the tools and techniques what we teach or what we follow helps you to find the multi bagger. खुद से, आपको किसी के पीछे नहीं जाना है, आपको किसी से पूछना नहीं है which is multi bagger, और आपको खुद से ही उसको खरीदना एट राइट टाइम. देन अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है, मार्केट इज सो कॉम्प्लेक्स, हाउ वुड आई फाइंड अ मल्टी बेगर, इसमें इतना रिसर्च है, मैं कैसे करूंगा, इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज नॉट कप ऑफ माई टी, आई हैव टू स्टडी सो मच. ऐसा कुछ नहीं है. थिंग्स आर वेरी इजी वंस यू गो थ्रू देम. दिस प्लेटफॉर्म इज इजी, बट येस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू फॉलो some or the other pattern for it to invest our money and to double our money, triple our money. और उसके लिए हमें थोड़ा सा चीजें को समझना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आप लोग को ये चार्ट दिखाया मैंने, ये चार्ट देखने में इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप देखो तो ये आपको सबको दिखाई दे रहा है कि ये पहले अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा था, और उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग. तो ये तो चार्ट एक लेमैन को भी पढ़ के समझ में आ रहा है. बट उसको कैसे फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, दैट इज ऑल अबाउट अ स्टडी विच इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस. And then people say market is not safe. Then what is safe actually? What if market are not safe, then what is safe? आप अगर बैंक रिटर्न में पैसा लगा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न. आपको जो रिटर्न मिल रही है, आप अपनी सेविंग्स करते हो और उसमें टैक्स भी आप फाइल करते हो. सो नथिंग इज गिविंग यू रिटर्न. और सेफ तो कुछ भी नहीं है. इवन इफ यू वॉक ऑन अ रोड, अगर आप सड़क पे भी चलते हो, डू यू फील सेफ?
Anything can happen at any point of time. अगर हम we are driving, we know driving, but we are not safe because हम safe क्यों नहीं है? Because हमें अपनी driving पे भरोसा नहीं है. Once you trust your driving, you can always safely drive and you can reach your destination. Similarly, if we know the tools and techniques to trade and to invest, we can always drive our shares in the right direction. ओके और सेफ क्यों नहीं है? आप लोग ये देखिए, दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी. सेफ क्यों नहीं है? ओवर द इयर्स ये चार्ट कम से कम नहीं तो 10 साल 12 साल पुराना चार्ट का डेटा ले रखा है. ये टोटल 10-12 साल का डेटा है एंड इट सेज दैट निफ्टी इज इन अप ट्रेंड. आप लोग खुद ही देखिए, Nifty has grown to 2000 level, then 8000 level, and currently it is at level of 17,000. So why it is not safe? क्या आपकी एफडी ऐसे ग्रो करती है क्या? इतना एक्सपोनेंशियली आपकी एफडी ग्रो करती है? जस्ट इमेजिन अगर आपने 2000 रुपए पे निफ्टी खरीदा होता और आज वो 17,000 रुपए है, तो विच इज मोर सेफ, योर एफडी और योर इंडेक्स? कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट? सो सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट. So sorry, I'm so sorry. तो देखिए, निफ्टी हैज गिवन यू अ better return over the years, which any of your other financial instruments have not given. FD never grows like this. Mutual fund, okay, people say we invest in mutual fund, but mutual fund कौन सा mutual fund? किस पे आप ट्रस्ट करोगे? कौन सा म्यूचुअल फंड आपको बेटर रिटर्न देगा? यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ बेटर देन अदर्स. तो हम अपने आप पे ट्रस्ट करके हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस मनी इज अर्न्ड बाय यू. आपने इस पैसे को कमाया है तो आप ही उसको इन्वेस्ट करिए. So when I talk about trading and investment, now I'm coming to the interesting part of it. अभी मैंने आपको बताया क्या क्या लोगों को illusion लगता है स्टॉक मार्केट के लिए. ऐसा नहीं है. Once I go through this trading and investment, then you will come to know how interesting it is. So when we trade or invest or whatever we teach on this platform, it is fundamental and technical. We have two tools basically to trade and invest. So fundamental is a different approach. Technical is a different approach. Fundamental talks about, so sorry, yield, market yield, and it talks about 52-week high, low. Technical analysis is basically the easiest tool क्योंकि ये हमें सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम डेटा के बारे में बताता है. इट टॉक्स अबाउट चार्ट्स जो अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, which are very easy to understand. It talks about charts which includes price and volume action. तो by definition of technical analysis क्या कहता है कि direction of prices a stock through the study of past market data, primarily price and volume. तो दो ही चीजें हमें यहाँ पे पता करनी है, which is price and volume, and that is always plotted on the charts through certain softwares. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ. ये सब हमें मिल जाता है. चार्ट्स आर इजीली अवेलेबल एंड डेटा इज इजीली अवेलेबल. नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल, व्हिच वाज नॉट देयर 10 years ago, एंड मेनी ऑफ सच स्टफ इज फ्रीली अवेलेबल. एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. मैंने इसको, ये शेयर है, इसका नाम है वेस्ट लाइफ. मैंने इसको खरीदा. I purely trusted on this chart and I didn't know what this company does. मुझे पता ही नहीं था कि ये कंपनी क्या करती है. मैंने ये शेयर खरीदा and the share price has increased. आपके सामने ही स्क्रीन पे है. On basis of my tools, my chart patterns, my technical analysis, I bought this chart. I bought this shares and it has grown. It has given me a good return. But मुझे नहीं पता ये कंपनी क्या करती है. After buying this, after earning money from this share, I got to know ये कंपनी हमारे almost lifestyle में है. Does anyone over here knows what this company does? What this company is all about? Anyone over here? Many of you must have purchased something or the other from this company. और कुछ यंगस्टर्स तो इसको रेगुलर जाते हैं और यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाते हैं. Anyone, any idea? No. So surprisingly, I was also very much surprised. Westlife takes care, it has the master franchisee of McDonald's.
मैकडोनल्ड्स में हम सब गए हैं, हम सब ने बर्गर खाया है. वेस्टलाइफ इज अ master franchisee of McDonald's in western and southern part of India. So I was very much surprised. So therefore I just want to tell you that charts are so interesting कि हमें सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे खरीदना है, हमें कंपनी के बेसिस पे नहीं खरीदना है. चार्ट्स हमें दिखाते हैं कि यहाँ खरीदो और वहां पे बेचो. That is it. It is so easy. Similarly, this is one of my favorite and has always given me a return since I know the share, which is Quest Corporation. It started, I invested in this share at the price of 170 and I sold this share at the price level of 800. So therefore this is again one of my favorite share. और जब मैंने इसको खरीदा था मुझे नहीं पता था ये कंपनी क्या करती है. Again a question, does anyone knows what does this company does? किसी को आइडिया है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन क्या करती है? No. Again, I bought this chart. यही मैं आपको बता रही हूँ. मैंने इस चार्ट को खरीदा, मैंने शेयर को खरीदा on the basis of my technical analysis, my tool, and that said me to buy and then sell it off at 800 rupees. मुझे सिग्नल आया अपने चार्ट पे कि मुझे इसको बेचना है और मैंने इसको बेच दिया. अब ये बढ़े या घटे उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. And this company is into facility management. मतलब ये जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, काफी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस इसको एम्प्लॉय करते हैं टू प्रोवाइड दी सिक्योरिटी गार्ड्स और एनी अदर फैसिलिटी part of the organization. And this is again one of the interesting charts which is still growing and growing and growing. From 100 it reached 1200 and again I was invested. I didn't know, again surprisingly, but it manufactures many of the watch components, that is Kamla dial, or again I bought it on my share, my chart pattern. So this is very very interesting to know how to buy and how to sell, और सब कुछ सामने एविडेंट है. जैसे आपका डॉक्टर सपोजिटली आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करके आपकी हेल्थ बताता है. या मे बी इफ यू टॉक अबाउट ECG, डॉक्टर जस्ट सीज द ECG एंड टेल्स हाउ योर हेल्थ इज, हाउ द हार्ट इज. सिमिलरली दिस चार्ट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द हेल्थ ऑफ द शेयर. ये हमें बताता है कि शेयर कौन से लेवल पे है और हमें कहाँ उसको खरीदना चाहिए और कहाँ हमें उसको बेचना चाहिए. Okay. Someone has sent me a message saying that which chart are you talking about? Has equal uptrend and downtrend? Which chart? Can you again mention? I would go back to that chart and explain you something. Equal uptrend and downtrend. Was it about any of these three charts? If you're talking about these three charts, it has a downtrend. क्योंकि हमारे पास ट्रेंड भी तीन तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वैलिडिटी. We have major trends, we have minor trends, we have primary trends, we have secondary trends. But I was invested in this share. I was not trading. There are two different things basically. One is investment, one is trading. I invested, I got the signal, I was out. If I would have been trading, अगर मैं वेस्टलाइफ में ट्रेडिंग कर रही होती तो मैं यहाँ कहीं निकल जाती उसमें पहले ही बाय अर्निंग दी रिटर्न. और उसके बाद दोबारा से आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी. अभी मैं आप लोगों को कुछ चार्ट पैटर्न बताऊंगी विच आर अगेन इंटरेस्टिंग, बट आई एम जस्ट नेमिंग दैट चार्ट पैटर्न ओवर हियर विच इज W. अगर आप लोग देख रहे हैं एक चार्ट पैटर्न होता है W विच इज ओवर हियर. ये एक W का फॉर्मेशन है और W को हम बुलिश पैटर्न मानते हैं जिसमें W कंप्लीट होने पे अगेन देयर इज अ बाइंग. तो वेस्टलाइफ ने दोबारा से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी विच वाज एट द लेवल ऑफ 469. यहाँ पे दोबारा से आफ्टर दिस W इट वाज अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. Where these charts are available, there are many platforms where the charts are available. I'll discuss this in detail later on once I finish this. And you don't have to form these charts. आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम ही आपको चार्ट्स बना के देता है. आपको सिर्फ कंपनी का नाम डालना है या मे बी आप एक फोल्डर बना सकते हैं जिसमें निफ्टी के टॉप 500 चार्ट्स हो एंड यू कैन सी ऑल दोस चार्ट्स. यस, दीज आर ऑल डेली चार्ट्स. ये सारे के सारे डेली चार्ट्स हैं. Yes, these are daily charts. And investment के लिए we always see daily charts. Intraday के लिए we see intraday charts which are 5 minutes, 15 minutes depending upon it. Yes, Mr. Pradeep,
You can ask the question. Yes, please. Can you unmute yourself? Yes, I'm waiting. You can ask the question. Okay, I'm proceeding further. Anytime you can ask the question. I have unmuted you. Anyhow, so once we have this faith, we can always, invest. I would like to share some basic things why I am trusting so much on this. Why? The reason is that this strategy, this tool of technical analysis has three assumptions. कुछ हम assume करके चलते हैं, and it says that market discounts everything. इसका ये मतलब है कहने का कि जो भी प्राइसेस हमें दिखते हैं उस प्राइस एक्शन में ऑलरेडी सारी न्यूज इनकलकेटेड होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना है तो वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है. जब तक न्यूज आप तक आती है दैट्स अ ओल्ड न्यूज, वो आपके लिए बासी न्यूज है. उसकी बेसिस पे प्लीज कभी भी बाइंग एंड सेलिंग मत करा करिए, क्योंकि न्यूज जब तक आती है आप तक, बिकॉज वी आर ऑल आम जनता, ठीक है, जब तक न्यूज कंपनी से हमारे तक आती है इट्स ऑलवेज अ ओल्ड न्यूज. बट दोज न्यूज न्यूज ideas are always inculcated into the price of any share or any index, and market always moves in a trend. How many trends we have? Anyone? How many trends in the market we have? Wait, I have got some answer. Yes, three trends are always there. Excellent. Up move, that is uptrend, downtrend, and sideways. So we assume that three different type of trends are always there. However, many times it's observed after new stock fluctuates a lot in the either. हाँ, either side पे करता है, but उससे पहले supposedly एक कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि ऑलरेडी उसके अंदर वो इनकलकेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो एंड चेक, और आई ट्राई टू शो यू पीपल. कुछ साल पहले नेस्ले का एक प्रोडक्ट है विच इज मैगी, एंड इट वाज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बिकॉज इट वाज नॉट हेल्दी फॉर किड्स. और वो जो है वो न्यूज वाज ऑलरेडी ओवर देयर बिकॉज नेस्ले का प्राइस हैड फॉलन. ठीक है. Do you sell same day after referring to daily charts or wait for few days? I sell when I get the signal. I sell when I get the signal. What about Maruti? Maruti has given us a very, someone has asked me, what about Maruti? Maruti has given me very good return in past 2 months, even in uptrend also and downtrend also, and it is all evident on the charts. I'll show you the chart of Maruti if you have a doubt, but it has given a very good return and it was there. Even IRCTC has given very good return. If anyone knows or trades and ever have bought, so therefore it has given very good return. Okay, Parul, I'll take all the queries later on. Fine. Okay. Yeah, one by one, we can take all the queries by the end of the session. Sure. So market moves in three trends and we always have to respect these three trends, क्योंकि कोई भी चीज चलती है ऊपर तो थक जाती है. इसका नॉर्मल एक लॉजिकल रीजन है. अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ोगे तो आप थकोगे, थोड़ा सा आपका इनर्शिया कम होगा, आपकी एनर्जी कम होगी, सो इट विल स्टॉप फॉर सम टाइम, राइट. और अगर आप बहुत ही थक जाओगे तो आप वापस नीचे आओगे. सो दिस इज हाउ मार्केट बिहेव्स. मार्केट ऊपर जाती है, थकती है, रुकती है, नीचे आती है, देन अगेन इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द माउंटेन. So it is how the markets are. And we have the third assumption, which is very, very important and also should be kept in mind. That is history repeats itself. जो भी मार्केट में होता है इट रिपीट्स. तभी तो आपको पता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज 3 ट्रेंड्स है. इसके अलावा कोई ट्रेंड ही नहीं है. एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग, और तभी हमें पता है कि 3 ट्रेंड्स है. सिमिलरली, for explaining this last point, I would tell you one thing which is very interesting. We have some chart patterns. I would skip some of the slides. I'll come back to these slides later on. But history repeats itself would be justified here. I'll come back.
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो देयरफॉर वी हैव चार्ट पैटर्न्स. हमारे पास कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं, हमारी बुक्स में कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो बहुत रिनाउंड टेक्निकल एनालिस्ट ने फाइंड आउट करे, फिगर आउट करे और उनको बुक में उन्होंने पेन डाउन किया. एंड व्हाई वी नो दिस? बिकॉज दे कीप ऑन रिपीटिंग. मतलब अगर हमें पता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक पैटर्न है, ये हमें इसलिए पता है बिकॉज इट रिपीट्स. हमें पता है हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है बिकॉज इट रिपीट्स, and that is how we trade on the basis of these chart patterns, and they're very useful. I'm a person who trades on the basis of chart patterns. So I would share one chart pattern, that is head and shoulder, and it is very interesting to figure out on the charts also. I have examples also for this. So this head and shoulder, as the name suggests, it represents ये एक human body figure के ऊपर pattern बना हुआ है, where the pattern has two shoulders and has a head. So therefore this is supposed to be shoulder and then head and then shoulder, which is a bearish pattern. इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस नीचे आता है, ठीक है, प्राइस कम्स डाउन, और कितना नीचे आता है, दिस एस्टिमेट इज ऑलवेज देयर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड द नेक लाइन is the target for our downside, and it is a bearish pattern. I am again repeating, bearish pattern का क्या मतलब है, इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइसेस नीचे आते ही आते हैं. So this is an example and I'll show you. Okay, can anyone find out are they allowed to annotate here? Parul, can participants annotate here? Okay, I'll go back to this again just to memorize you people. That is, this is shoulder, this is head, and this is shoulder. This is a bearish pattern. इसी पैटर्न को हम उल्टा बनाएंगे तो वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर होगा. क्या यहाँ पे कोई मेरे को रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा सकता है? Okay, Nisha. Yes, please. Are they allowed to annotate, Parul, here? We can unmute Nisha. Sure. They are on hard mute right now, so that there should not be any disturbance in the webinar. Okay. Yes. Can you find out reverse head and shoulder over here? Yes, ma'am. Where? 13,000 के पास अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं 1300. Sorry, for 1,400. So then we find opposite head and shoulder. Okay, thank you, Nisha. Thank you. So this is I don't know, I still didn't get where she was telling, but this is one shoulder. Let me annotate here. This is shoulder, this is head, and again this is a shoulder. So this is reverse head and shoulder, which is a bullish pattern, and it says that the price would go up, and I would show you the next chart for it. I hope all of you have got it. ये उसका उल्टा है, reverse pattern है, which is shoulder, head, and then again shoulder. And I would show you after that Reliance. This is the chart of Reliance, and look at this, look at the power of chart pattern. The more consolidated for more longer of period time, and then you get a better result. मतलब जितनी ज्यादा देर ये पैटर्न बनने में टाइम लगाएगा उतना ही बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा. अगर हम देखें तो ये शोल्डर जो मैंने मार्क करा था पिछली स्लाइड पे, ये हेड और ये शोल्डर, हेड और शोल्डर के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमारे ऊपर के लिए टारगेट है. एंड यस, इट वाज अचीव्ड बाय रिलायंस, एंड इट इज अ डेली चार्ट. ठीक है, डेली चार्ट का ये मतलब है इसने कुछ महीने लगाए ये पैटर्न बनने में, और उसके बाद ये ट्रिगर हुआ और आपको उसने प्रॉफिट दिया. सो दिस इज द पावर ऑफ चार्ट पैटर्न्स, एंड दिस इज हाउ वी से दैट हिस्ट्री रिपीट्स itself. Okay, and if you go to the next slide, I'll talk about one more pattern, which is again known as double bottom. Double bottom मैंने आपको बताया था W and double bottom are same patterns, where W says that after completion of this the price would go up. ये neckline है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा. और double bottom W is similar, same pattern. एक bottom बना,
दूसरा बॉटम बना और उसके बाद प्राइस ऊपर गए, और जितनी ज्यादा देर लगाई इसने ये बनने में उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा. आई वुड शो एग्जांपल फॉर दिस आल्सो. दिस इज टाटा स्टील, and Tata Steel, this again I am figuring out, I am not asking anyone, but आराम से मिलता है. ये देखिए यहाँ पे एक बॉटम, I'll annotate again. This is first bottom, this is second bottom, and luckily इसने एक चीज और कंफर्म कर दी कि इसके ऊपर एक और बॉटम बनाया, which is higher bottom. So therefore double bottom and again a higher bottom confirms that there would be an uptrend and we get a chance to buy. And here hence it is, I'll show you. Okay, so this is the next chart after the double bottom. Tata Steel prices have gone drastically up. This is again the power of chart patterns, और यही हमारा research work है, that after every trading hours we have to figure out what to buy next and when to buy next, and this is our research. This is again ONGC, and we again have double bottom on ONGC. They are not difficult to find, but yes, we need to wait patiently and we need to figure out the chart patterns patiently. Okay, and okay, I would like to tell one more thing which is very interesting and basic. I was talking about trends, that is rising, falling, and flat, right? Okay, and another name for flat is choppy. So therefore, how do we identify the rising trend? It is very, very easy, as it has been said by Dow. Dow theory says that when we have higher tops and higher bottoms, it says that it is uptrend, and we can clearly identify it with the help of the line chart. Higher tops and higher bottoms, and we are always suggested to buy on the letter N. I would draw for you. So this says, this is letter N, which is a bullish letter over here. और जब भी हमें लाइन चार्ट में दिखे तो हम इसके ऊपर, which is the top, ये हमारा टॉप है, इसके ऊपर हमें बाय का सिग्नल मिलता है. This is just a very basic and small thing which I am telling you. Higher tops and higher bottoms says that it's an uptrend, और जैसे ये N बनता है इसके ऊपर हम बाय करते हैं. So it is very easy to understand once you know this platform. And this is always reflected in charts. Like for example, look, I have plotted this for you all, and coincidentally, this is chart of Maruti only. Someone was talking about Maruti because it's one of my favorite charts also. Maruti is always favorite. So this is T1, B1, then we have T2, B2, T3, B3. So we have so many tops and bottoms which are higher than the previous ones. And this is how Maruti has always given a good return, because Maruti always follows technical analysis. And as we know, technical analysis is always easy to make profit out of it. And one more thing, if uptrend says higher tops and higher bottoms, downtrend says it is always lower tops and lower bottoms. Okay, and this is flat to rising. So this is one again elaborated chart of Quest Corporation. Quest Corporation, again it has higher tops and higher bottoms, जो मैंने आप लोग को चार्ट पहले दिखाया था. और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? कंसोलिडेशन. जितना अच्छा कंसोलिडेटेड चार्ट हमें मिलता है उतना ही अच्छा वो एक्सपैंड होता है. जितना, अगर आपने कभी वो स्प्रिंग वाला टॉय देखा होगा, अगर आप उस स्प्रिंग को प्रेस कर देते हो और उसको दोबारा से ओपन करने का परमिशन देते हो तो स्प्रिंग ओपन्स अप विद द फोर्स. सिमिलरली जितना चार्ट पैटर्न, जितना भी चार्ट आपको कंसोलिडेटेड चार्ट एक मिलेगा और वो जितनी ज्यादा देर का होगा उतने ही फोर्स से वो एक्सपैंड करता है इन ईदर डायरेक्शन. इन ईदर डायरेक्शन का ये मतलब है कि ये हमें फिगर आउट करना है कि वो कहां पे जाएगा आफ्टर अ कंसोलिडेशन. एंड इफ इट्स अ गुड कंसोलिडेशन इट गिव्स यू अ गुड रिटर्न. तो हमारा टास्क क्या है? टू फिगर आउट द गुड कंसोलिडेटेड चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर tools and techniques which we have in technical analysis. And then being a technical analyst, we always know in advance that which direction it will go into. मतलब मुझे ये पहले से पता था कि Quest Corporation इस consolidation के बाद ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. But ठीक है, we always
ऑलवेज हैव दिस टूल एंड टेक्निक, बट एक सेफ्टी के लिए, जैसे हम सपोजिटली हमें पता है कि बाहर हम जा रहे हैं, बारिश होने वाली है, वी ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विद अस। सिमिलरली एक यहाँ पे डिसिप्लिन का एक टूल होता है विच इज नोन एज स्टॉप लॉस, और वो हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ पे लगाना है अगर हम इसको बाय कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप सड़क पे गए, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए हम अम्ब्रेला लेके गए। सिमिलरली अगर हमने इस चार्ट को बाय करा है और वो अप ट्रेंड में है, पर वो नीचे भी आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर फोर्सेस इन द मार्केट जो इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। सो फॉर सेफ्टी पर्पस वी ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस. We never do blindly, and this is part of discipline in technical analysis, and this is part of being patient in technical analysis. And maybe stop loss is one thing जिसको हम बोलते हैं our cost of investment over here or cost of trading over here. Okay, again this is one more example of State Bank of India which has given a good return, क्योंकि ये चार्ट जो था बहुत महीनों के लिए कंसोलिडेट करा था, और देखिए आप कितना अच्छे से वो कंप्रेस था, और अगेन मैंने आपको क्या बताया, ये स्प्रिंग की तरह एक्सपैंड हुआ और ऊपर चला गया, एंड अगेन इट गेव 2 times signal to buy again where we could have invested money again. Okay, और ऐसा ही कंसोलिडेशन आईटीसी में था कुछ टाइम पहले था, जिसमें बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके उसमें अच्छा रिटर्न निकाला है। एंड सिमिलर चार्ट इज अगेन ऑफ कोल ऑफ इंडिया व्हिच इज देयर करंटली, एंड इवन इफ यू सी वीबीएल इज आल्सो अ गुड चार्ट, बट दैट डजंट मीन, मैंने अगर ये 2 चार्ट के नाम लिए, दैट डजंट मीन यू गो एंड बाय इट। जब तक आपको ये नहीं पता उसको कहाँ पे खरीदना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या उसका टारगेट होना चाहिए, वी शुड नेवर बाय ऑन एनीवन सेइंग। ठीक है, जब भी हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले हमारे पास वी हैव 3 थिंग्स इन हैंड व्हिच इज आवर बाइंग प्राइस एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है अपने लिए। ट्रेडिंग सिस्टम सेज दैट आपको कौन सा ट्रेड खरीदना है और कौन सा ट्रेड बेचना है। Okay, so this was the example of ONGC. So as I said, टेक्निकल एनालिसिस तभी मैंने आप लोगों को बताया स्टॉप लॉस के लिए। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ मैजिक और 100% करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर हम पंडित की भी बात करें, हम यू नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी गोइंग टू पंडित्स, सो देयरफॉर यू शो योर दिस थिंग हैंड टू देम टू नो व्हाट इज योर फ्यूचर। तो देयरफॉर टेक्निकल एनालिसिस इज सिमिलरली लाइक एनालिसिंग योर फ्यूचर, बट ये एक फ्यूचर नहीं है, ये एक प्रेजेंट है, जिसमें हम प्रेजेंट में इसको यूज करके अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। बट ऑलवेज इट इज नॉट 100% करेक्ट। अगर वेदर फॉरकास्ट भी होता है तो वो 100% करेक्ट नहीं होता है, देयर कैन बी डेविएशंस, कुछ ना कुछ डेविएशंस हो सकती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और अपना टारगेट इन हैंड लेके चलते हैं। And then there is a saying that there is no perfect trade. कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं होता है, but there are good trades and bad trades. कुछ ट्रेड्स गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, बट आपकी गुड ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कैन मेक ऑल द लॉसेस कवर। इतना अच्छा ट्रेड हम फिगर आउट कर सकते हैं कि जो हमारे बैड ट्रेड्स होते हैं हम उसको कवर कर सकते हैं। दिस इज द आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड यू कैनॉट हैव ऑलवेज अ परफेक्ट ट्रेड। ना ही आप परफेक्ट ट्रेड, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हर कोई परफेक्ट नहीं है। These are the golden rules of investing. We should always remember, we should start early. अगर हमें ये टूल पता है, हमें प्लेटफॉर्म पता है, why not? What is stopping you to learn technical analysis? What is stopping you to make your trading so easy? हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। एंड द पीपल हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड और आर इन ग्रेजुएशन, दे हैव द राइट अपॉर्चुनिटी। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है दैट दे अर्न एंड देन दे इन्वेस्ट। सो दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम। And then the golden rule of investing is we have to be patient. We don't have to gamble. We don't have to be greedy. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें बिगनर्स लक भी मिल जाता है। जैसे ही हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, एंड देन वी बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि वाओ आई एम द किंग और आई एम द क्वीन ऑफ स्टॉक मार्केट। बट ऐसा नहीं होता। until unless you don't have any trading system, you cannot be the king or the queen. For that you have to learn some trading system, and this is what I'm saying, that learn and start with small amount. The students, the age group, the graduates, they should always start with a small amount.
And this is what we need to know. We need to study, we need to research, we need to develop our trading system and trade small and test. First test your trading system, first derive your trading system, then test your trading system, and then once the proof is there, then you start trading. Okay, this I was going through newspaper and I really found it useful, because nowadays why online? The question is, if the courses are online over here, so why online? Because this pandemic has somehow been the blessing in disguise, that it is giving you opportunity to stay anywhere in the world or anywhere in the India, and you can learn your courses, you can learn your degrees over here on this platform, which is online platform. So I would hand over to Parul for this, to share further about our courses and learning at Sharegurukul. Any queries I can ask, or first Parul, you can take over, or should I take over? Hi, Shrestha. You can take the queries one by one, I think. Okay, sure. Okay, Jay Sharma. I cannot suggest you indicators for intraday. I can teach you the indicators for intraday. There is nothing suggestion. It is I can teach, and then you can figure out the best for yourself. How fast intraday trader you are. Intraday में भी कुछ लोग jobbers होते हैं, कुछ लोग traders होते हैं. How fast you can trade, how fast your fingers and brain can work, that you can decide for yourself by understanding all the indicators and their usages. So I can teach them, I cannot suggest them. Okay, if I want to learn what is process and what is the fees, that Parul is going to assist you later on once I hand it over to her. Okay, and suggest me intraday. Again, there's a query, intraday indicators, and discuss briefly. I would love to teach you all the intraday techniques, tools, since we'll have to start from ABCD. It is not difficult to learn, but yes, you have to learn. And if you have the opportunity to learn, this is the right time, because this is your present, and you can, do best for your future by learning it in present. Shweta, why don't we do one thing to make this session more interactive? We can allow them one by one to, ask their questions, and Sure, then we can answer. But sure, they can raise, yes, this is better. They can raise their hands and we can unmute them. Exactly. But before that, I want to tell them about the Sharegurukul thing, and then they can raise hand, we can solve all their queries. Okay, sure. Gautam, I'll take up your query later on. I have read it. Yes. Yes. Can you open the slide? Can you move sure, further? sure. Yes. So hi everyone. Hope this session would be very informative. I personally, like your session, Shrestha, and I'm, going to invest. I will be taking a lot of input from you, and then I will be surely, investing. So here we have at Sharegurukul, we have online live classes by expert coaches, and like we have Shrestha in her, trainers, and then we have other also. Will share that details as well. So the convenient time, as we have weekend batches, so that is convenient because hope everybody is working. So we have weekend batches, and we will give you tips and tricks how you can best, you will get best ROI, return of investment. So we have 4 modules. One is basic of, we'll start with basic thing. So we start with basic of stock markets, derivatives, that is 24 hours. Then we have in module 2, we have technical analysis, that is advanced program. So we'll start with the basic, and then we'll give you the advanced, idea. And then in third module, we have professional. So for working professionals, and, for professionally, they can make their, investment. And then in the fourth module, we have fundamental analysis. So these are the hours of training we provide you. Can you move to this next slide?
So as I told you, we have, Shrestha in panel. We have our coaches are Ashok Jain sir. If I talk about Ashok Jain sir, he has been, in this stock market. He has a lot of experience into stock market. It's been 40 years. He has been associated with stock markets, and he has been initially, a lot of when I interact with student, a lot of student ask that, I'm into engineering, I'm into science background, shall I invest? My background is not the same. So he is also an engineer, and he comes with a 40 years of experience. He has been giving advices to lot of channels, and 100%, most of the time his predictions are always correct. So he comes with a 40 years of experience. Then you all have interacted with Shrestha. And then we have CS Sachin. He is again has a lot of experience. He has been into this sector from last 15-20 years. He has his channel also, My Money Mind, and he has been associated with BSc, and he used to give lessons also there. Then we have Rakesh Bansal. So all these are very experienced people, basically from stock market. He has been, their predictions are almost right. So this is the kind of faculty we have, the trainers, coaches we have, who will be guiding you that how you can go further with stock marketing. Can we move to the next slide? Sure. So basically what you see in the white thing, that stock market advanced derivative, I was talking about 4 modules. So these are the 4 modules. So if you go like, if you want to go for stock market, market and advanced derivatives, then we have 7500 technical analysis. If you want to go, one by one, or you want to just have stock analysis advanced program or fundamental analysis, there are a lot of, students come to us who only want to go for fundamental analysis or only want to go for stock market and advanced derivative. Then we have these modules, but this is a 3-in-1 program. If you want to go for only the above 3 program, then the total cost is 32,250. And if you go for complete 4-in-1 program, that is 42,250. But for today we have a special discount offer. We have an offer wherein instead of 32,250, you need to pay 22,500. And for all the complete 4-in-1 program, instead of 42,250, you need to pay 30,000. So this is only valid for top 10 student. This is first come first basis kind of a thing, that so you have to hurry. We'll share the payment link in the chat box, so you can go ahead and book your seat. So as I told you, that 3-in-1 program is 32,250, but you only have to pay 22,500, and 4-in-1 is 42,250. The actual fees is 42,250. So you only have to pay 30,000. So actually you are saving your money in both the programs. So and the best part is you don't have to pay immediately, because obviously we don't have it's difficult. We have different EMIs option, and we have interest fee free student loans. So you just need to pay 10% of the fee today, and that is, if you want to go for 3-in-1 program, then 22,500. 10% is 2250. And if you want to go for the complete module, that is 30,000. So you just have to pay 3,000. So only the 10% of the fee today, and rest we have 2 options. One is easy EMIs, and then we have interest free students loan. You just have to give 1,000 plus GST for the processing of the loan, the formality. Rest everything is interest free. You don't have to pay extra, even a single penny extra for the loan. So we have these 2 facility also. Next slide. Yeah, sure. Yes, so this is the toll-free number. If you have any doubts, any queries, this is the number. I'll share the number in the chat box also, and the payment link. So you can pay online, and you can you just click the payment link, and then you can make the payment.
But in case you have certain doubts, you can call on this toll-free number. You can call on this number, and our team will be very happy to assist you whatever your doubts are. So thank you so much, everybody. I hope this session would be very interactive. And, to make the session little interactive, what we can do, Shrestha, we can solve all their questions. Yes, we can. Yes. So they can raise hand. Yeah. I would stop sharing now. Yes. So, okay. They can raise hand, and I think Pradeep has raised hand. Yes. They can raise hand, and then we can put them on, Yeah, you can unmute yourself. Yes. Pradeep, you can unmute yourself to ask the question. We are waiting, Pradeep. Anyone else? Please raise the hands. Aman Jha. Okay. Aman Jha, are you able to unmute yourself? Yes, ma'am. Yes, Ask the please question. ask. Ma'am, actually, I want to ask that the future and option trading and the daily basis intraday trading in Nifty options, are there basically same strategies on the both tradings? Both you want to ask that how do we trade futures and options? No, I just want to ask in Nifty option and future tradings and other basis trading normally Tata and other whatever IRCTC, is there It's same. basically the same strategy for trading Yes, options? this tool of technical analysis helps you to trade any kind of underlying मतलब आप कोई भी instrument trade कर सकते हो with the help of technical analysis, and even not even index shares, you can even trade commodity, you can even trade cryptocurrency, wherever the charts are available, the price volume action is available, आप उसको trade कर सकते हो, आप currency भी trade कर सकते हो once you know technical analysis. Is there any role of fundamental analysis also? They both are different approaches. And it is good to know both the approaches. But to become a trader, yes, technical analysis should be learned. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Pradeep, Hello. you're waiting. Yes. मैम एक्चुअली आई एम डूइंग जॉब एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ करियर ट्रेडर हम यूज कर सकते हैं मतलब एज अ करियर अगर मुझे बनाना हो ट्रेडिंग में तो yes I am a female and अगर नॉर्मली मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब लेफ्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ तो उसमें नॉर्मल मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? Sure, definitely you can. India में अभी बहुत potential है इस market में. We have just started this market. बाकी जगह तो already it's a profession. If you go to America, it's a profession. Many people trade in options. यहाँ तो लोग shares में trade करते हैं. If you go to America, options में लोग trading ही करते हैं, investment भी करते हैं. So that is a profession over there. Once you learn this technique, you can always make this as your profession. But yes, it has to have some strategy. मतलब आप ऐसे नहीं उसको प्रोफेशन बना सकते कि आपने किसी से सुना, आपने शेयर खरीद लिया, ऐसे प्रोफेशन नहीं बन सकता. मेरे लिए ये एक प्रोफेशन है. आई ट्रेड मेरे लिए एक प्रोफेशन है. आई टीच एंड आई ट्रेड and I trade from 9:15 to 3:30 I trade, but उससे पहले ही मेरा काम शुरू हो जाता है. I have to switch on my laptop at 9 o'clock, है ना, and then after 3:30 also I work on my chart. So it's my profession. मैम आपके हिसाब से मतलब कितना टाइम मैं ट्रेडिंग में दूं लाइक अ प्रो ट्रेडर बनने के लिए? मतलब फिर भी नॉर्मली 2 साल 5 साल इतना लंबा जर्नी भी नहीं है. आपको ये कोर्सेज बताए हैं, आप ये कोर्सेज करिए एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग. वंस यू नो ऑल दिस, आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं एंड देन साइड बाय साइड यू कैन ट्रेड एंड देन यू कैन लीव योर जॉब. You can, and even if you can manage both of them, आप वो भी कर सकते हो. You can become a swing trader also. There's so much to do, so much to learn over here. जरूरी नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडर बने, आप स्विंग ट्रेडर बन के भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर सकते हैं. आप अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करिए और उससे भी आप अर्न कर सकते हैं. मतलब आपने कोई शेयर आज खरीदा, स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है, आपने कोई ऑप्शन आज खरीदा,
ठीक है, आपको पता है उसको 2-3 दिन लगेंगे। अब जैसे मैंने आपको जो चार्ट पैटर्न्स दिखाए हैं वो एक ही दिन में बाहर नहीं आ जाते हैं, एक ही दिन में अप ट्रेंड में नहीं जाते हैं, 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। सो दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। आज खरीदा, 3-4 दिन बाद आप उसको सेल कर दो। सो दैट इज स्विंग ट्रेडिंग विच यू कैन इवन डू विद योर जॉब ऑल्सो। दिस इज एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग दोनों करता हूँ। बट उसमें क्या होता है ना, मैं नॉर्मली पहले की तरह मतलब डेली 2-3 बार मेरा लॉस हो गया, मैं सोचता मुझे लॉस हो गया। बट मुझे किसी ने समझाया कि इसमें एक टाइम होता है, जैसे एक हफ्ता का मान लिया मैंने नहीं नहीं 15 नहीं। दिन का मान लिया, 15 डेज में मतलब पर आप किस परसेंटेज बेसिस मेरे पे को ट्रेडिंग करते हो प्रदीप? आप किस बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो? वीकली ट्रेडिंग हो गया, नहीं मंथली हो नहीं, गया, आप क्या देख के ट्रेडिंग करते हो? आपको शेयर अच्छा लगता है, नाम अच्छा लगता है तो आप बाय नहीं कर नहीं लेते हो? नहीं नहीं नहीं, मैम नहीं। एक्चुअली मेरे पे काफी सारे चार्ट हैं, इंडिकेटर्स है, मैंने काफी मतलब रिसर्च किया, रिव्यू किया। नॉर्मल मुझे 6-7 मंथ होने वाले हैं, मैंने काफी टेक्निकली पढ़े, फंडामेंटल। बट आपको क्या उन ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स का सिग्निफिकेंस पता है कि कब उनका टाइम फ्रेम कम करना चाहिए? क्या आपको ये पता है कि कौन सी मूविंग एवरेज कब लगानी चाहिए? मूविंग एवरेजेस अगर आप ट्रेड करते हो आपको पता होगा उसमें मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो मूविंग एवरेजेस कौन सी लगानी चाहिए? 8, 10, 13 की, या 20, 21, 50 या 50, 200? कौन सी मूविंग एवरेज से ट्रेड करना चाहिए? आपको ये पता है? प्रदीप आप म्यूट हो गए हो। प्रदीप, हाँ, तो हेलो। क्या आपको पता है कि आपको कौन सी मूविंग एवरेज अपने लिए यूज करनी चाहिए? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है। क्या आपको ये पता है कि आपको कौन सी यूज करनी चाहिए? मैम दोनों यूज करता हूँ मैं, दोनों में आपका जो टाइम होता है 200 डेज का होता है, 15 डेज और 13 डेज का, मोस्टली तीन आप तीन यूज करता हूँ। नहीं, आप इधर एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं या सिंपल कर सकते हैं। तो आपको उसका सेटअप पता होना चाहिए। देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज बंडलिंग ऑफ मूविंग एवरेजेस। हर ऑसिलेटर, हर इंडिकेटर का अपना एक सिग्निफिकेंस और यूसेज है, राइट? तो उसको समझना बहुत जरूरी है। बेटर है आप किसी से समझ के करिए तो ज्यादा अच्छा है। और रीडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसमें सब चीजें नहीं लिखी होती हैं विच वी कैन टेल विद आवर ओन एक्सपीरियंस, राइट? Can we move to the other person? I think JK Sharma and Naval also raised hand, then Asha also. So we'll start with JK Sharma. शर्मा, Yeah. Yes. And Hello. you Good can, afternoon, madam. sorry Good to afternoon. interrupt in between. They can enroll by pay. The link is on in the chat box, so they can pay by registering only by 10%. Good afternoon, ma'am. Can you hear me? This is JK yes, Sharma. yes. Good afternoon. We can hear you. So thank you for you have presented very scientific analysis and research. Thank you. Ma'am, these charts are freely available or these are all available on payments or something? Sir, the charts are available, freely available, but क्या है, कुछ restrictions होती हैं। आप 2 से ज्यादा इंडिकेटर फ्री में नहीं लगा सकते हैं। मतलब आपको अगर 2 इंडिकेटर लगाने हैं तो चलता है, अगर उससे ज्यादा इंडिकेटर या ऑसिलेटर लगाने हैं तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चार्ट मिलते हैं कहाँ? कोई वेबसाइट है या क्या? व्हाट इज द स्कीम? Yes, there are websites, many websites available जहाँ पे available होते हैं ये charts. अच्छा, since childhood, madam, we keep hearing of bulls and bears, how they rig the market. तो ये सब सच है या क्या? ये सब myth है? What exactly is the scene? अब bulls and bears कौन है? हम ही लोग हैं ना, buyers and sellers. नहीं, हम लोग मैडम, हम लोग तो रिटेल वाले हैं, हम कार्टेल थोड़ी हैं। यू एंड मी आर नॉट ए कार्टेल। आई एम टॉकिंग ऑफ कार्टेल्स। हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि हाँ, हम लोग इतना ऐसे, मैं इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करती हूँ। प्योरली चार्ट एक्शन, एंड दैट इज देयर ऑन दी चार्ट, दैट इज देयर ऑन दी चार्ट, एंड इट हैज बीन माय सक्सेस रेट। अगर आप पूछेंगे मेरा सक्सेस रेट 8 to 10, मतलब 8 ट्रेड सही जाते ही जाते हैं। 8 That's is the very good, accuracy. very good. Yeah, Yes, 2 80%. trades do go wrong. उसमें कई बारी क्या होता है, because we are humans, जितना भी हम डिसिप्लिन कर लें, बोल लें, बट कभी कुछ हो जाता है। बट 8 ट्रेड्स यूजुअली गो करेक्ट, बिकॉज आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर। मैं तो बैंक निफ्टी रोज ट्रेड करती हूँ,
तो मेरे तो ट्रेड्स ही काफी होते हैं दिन के। नहीं, that you are playing fairly, but how these manipulators मैं ये कह रहा हूँ, how who are नहीं, they? अगर मार्केट इतनी मैनिपुलेटेड होती तो हम जैसे लोग प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते ना। हम तो मैनिपुलेट करते नहीं, ना ही हम इतने बिग कार्टल्स को जानते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते थे। नहीं, but we have had cases of illustrious cases of places like Ashwat Mehta and Ketan Parikh and all other gentlemen. उसके बाद सेबी आ चुका है और सेबी ने काफी चेंजेस करे हैं, काफी रिफॉर्म्स बनाए हैं, काफी सारे एक्ट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से अब तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। No, that's nice, ma'am. But what we are hearing about this Madam Chitra Ramakrishna, the lady who's trading who's running the office on the advice of so-called yogi. This is there are no checks and balances. नथिंग टू से, बिकॉज ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है। अगर इतना होता तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते, हम लोग कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते। Because of the computerization, there is more transparency. That's right. Yes, there is more transparency. Yes, and उसकी वजह से ऐसे scams होने भी कम हो गए हैं because of technology and transparency. So you would recommend that one should do a course only, then enter into this big time? Yes, definitely. Otherwise, you're going to burn your fingers. No, we have burnt enough fingers in mutual funds. तो सर, आप किसी और के ऊपर क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं ना अपने मनी के लिए? किसी और के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? Because of the, देखिए एड, आप लोग तो एड कैंपेन चलाते नहीं, वो चलाते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो हजारों लाखों लोग फंस जाते हैं। राइट। तो इसीलिए हमें अपना पैसा खुद पार्क करना आना चाहिए। कहाँ पे अच्छे से पार्क कर सकते हैं हम अपना पैसा? Yes, you are right. यस सर। और जब वो चीज इतनी इजी है तो बेटर है हम उसको इन्वेस्ट उसी के तरीके से करें। It is not Thank you. You have tried to make it very easy and sir, I have taken many batches of my father is also technical analyst, and I have taken many batches of this age group, and they are actually trading on technical analysis. It is good for elderly chaps like me. Yes, sir, definitely. I have many of my clients of this age group. And sir, you won't believe that Shrestha was our student, and she was a student of us. So, if you remember that when I was telling about our coaches, so Shrestha was a student of Ashok Jan sir. Remember, yes, sir. Ashok sir has been my mentor 15 years back. Yes, sir. So she was. But what is the say average time you recommend for staying in a particular stock? 3 months, 6 months, 1 year, 2 years? सर, ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। यस, इट ऑल डिपेंड्स। आपको अपने ट्रेड्स को फिगर आउट करना है कि ये ट्रेडिंग का ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट के लिए है। एंड देन वी हैव लिस्ट ऑफ सम शेयर्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ शेयर्स में हम ट्रेडिंग करते हैं। नहीं, बट यू जस्ट सेड दैट कि जो मार्केट में ऑलरेडी मार्केट को पता चल जाता है और उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है बिफोर वी कम टू नो, तो पता कैसे चल जाता है कि लीक आउट हो जाता है, र्यूमर है? नहीं सर, चार्ट्स, इट्स मैजिक ऑफ चार्ट्स। वो हमें मैंने आपको जैसे चार्ट पैटर्न दिखाया, हेड एंड शोल्डर, जैसे ही वो पैटर्न बना तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। हमें पता है कि हमें अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो उसमें हम शेयर्स खरीद के रख लेंगे। सर, जैसे अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो जिंदल स्टील में मैंने अभी काफी इन्वेस्टमेंट किया था, एंड अभी रिसेंट ही उसको मैंने बेचा है। तो वो सारा चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। नहीं, वो तो चार्ट्स आपने बोला चार्ट से पहले ही, चार्ट में पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, हमें पता चलने से पहले ही। यस सर। हाँ सर, चार्ट्स में दिखता है, प्राइस एक्शंस आर ऑलवेज देयर इन दी चार्ट। ओके, थ्रू चार्ट्स वी कैन कम टू नो। मतलब आप इवेंट होने के बाद सोचिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। Right. Yes sir. So can we move thanks to a lot. Naval Kumar? Thank you sir. Yes. Sir, if you still have certain doubts, you can call on our number, and our team would be happy to assist you in a better way. Yeah, thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Shall we move to Naval Kumar? Yes, I have unmuted. Yeah, Naval, can you unmute yourself? Yes, first of all, this is really appreciable webinar which you organized, and I really learn a lot of things from both of you. Ma'am, actually, I'm a new player in this trading market. You can say last 1.5 years I'm doing this intraday trading, mainly in the Nifty and Bank Nifty. And around 12 more than 12 lakh rupees मैं लॉस में जा भी चुका हूँ because of knowledge नहीं था, और कॉल्स ले लेता था किसी की भी उठाकर और उस कॉल्स पर ही कोशिश करता। So more than 12 लाख मैंने अपना बर्बाद कर चुका हूँ।
इवन उसके बाद थोड़ा बट आपको अपने पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, इसीलिए आप ये कोर्स करिए और सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग करना सीखिए. राइट Because we are going to equip you with some of the tools which always help you in a positive way. Right. So, ma'am, I have some queries. Even I was trying to call on your customer care number which you given, but no one is picking that call. Then I raised my hand here. The thing is, I'm a working person. Okay, मेरा mostly travel और unplanned travel काफी रहता है. Okay. So the point is, जैसे कि आपने अपना कोर्सेज के कुछ आवर्स बताए कि अलग अलग कोर्स में मान लीजिए 6 आवर 24 आवर इस तरह को आवर्स का है और वीकली शायद क्लासेस आप बता रहे थे. इन केस मैं आपके कुछ मिस कर जाता हूँ क्लासेस, इन दैट केस उसकी रिकवरी कैसे करूँ? आई मीन मैं दोबारा से उसको रिकवर करने के लिए उस कोर्स को किस तरह से आ पाऊंगा? Can I answer this? Sure. You will be getting a recorded session. For example, if you miss due to some reason, if you miss the class, the same class recording you will be getting maybe in 1 or 2 days. You will be getting the recording of the same. And also we basically have weekend batches. So whatever you learn during the weekend, you can apply during the weekdays. And in case there are few doubts which has not been clear, or you thought that you are understand that that topic, but when you were revising on when you are applying, then you think that you need to have a look of that doubts or maybe that topic. So you can anytime go to the recording and you can go through that topics again. So you will be getting the recording of each session, maybe in 1 or 2 days, but you will be getting it. Perfect. The another question is, आप लोग लाइव सेशन में भी कुछ ट्रेड्स मतलब एक हमें दिखाएंगे उसमें बीच में कभी कभार? वीकेंड्स पे तो मार्केट नहीं चलता है, बट वीकेंड्स में नहीं मीन कभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज आप कर रहे हो कि लाइव सेशन में हम देखना चाहिए? बिकॉज देखिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली स्टेज पर मैंने काफी मनी बर्बाद किया, ठीक है, कॉल्स पर भी था, कुछ कोर्सेज के ऊपर भी, बट क्या होता है एक आप जैसे भी ऑफलाइन बता रहे हो, लाइव पर नहीं हूं मैं, सो उसमें और एक लाइव में करने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत से क्वेश्चंस उस वक्त माइंड में आते हैं. सो माय क्वेश्चन है कि ऐसा कभी कभार चाहे मंथ में एक बार या 2 मंथ में 1 या 2 बार लाइव सेशन का कुछ प्रोग्राम हो सकता है? Exactly, we can have a doubt session wherein we will be able to solve all your doubts. So Shrestha, we can have one session, doubt session on a weekday, so that they can have a live experience of it. Sure, we can. Yeah, we can have it. We will be having a doubt session, so there you can solve all your queries. Okay. सो आप मुझे इसका कोर्स का थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल भेज सकते हैं, लाइक इसमें ऑप्शन चेंज वगैरह और पीसीआर वीसीआर जो भी होते हैं, व्हाटएवर, आई एम नॉट फुली अवेयर अबाउट दीस थिंग. सो ये सब चीजें कवर होगी या ओनली चार्ट पैटर्न पर ही और फंडामेंटल पर ही कवर करेंगे? So Naval, you will be getting a WhatsApp messages also. You can reply on that and they will be sending you all the details. Plus, if you want, you can call again on the toll-free number. They will revert you with all your queries. Maybe they were busy on some other call. That's why they were unable to attend your call. You can call again. And still, you have the toll-free number. That is WhatsApp number also. You can WhatsApp on that number as well. Okay, great. Whatever is convenient, you can go ahead with the same. Sure. Surely team will get back to you and solve all your queries. And anyway, Shrestha would be there. If you join us, then Shrestha would be there to help you. And we have experienced trainers. They will be guiding you and helping you. Yes, I'm very keen to join this course program, but before understanding the things, I'm not going to register. That's why I'm asking if you can help me to understand the things, whatever the question I'm asking. So what you can do. Okay, Naval, what you can do, you can send a personal, through chat, you can send a direct number to me. I'll arrange a call back for you. Okay, I don't have your number. So on which number? No, you just through chat, you can send me your number. Through chat, you can send a direct number to me. Okay, great. And if you want, anybody wants to go for the enrollment, this is the payment link. They can directly go to the payment because the offer is valid only for first 10 students. Otherwise, you won't be able to make the, you will not get the discounts. So that is only valid for top 10 students, whoever enroll first. Okay.
So your name was Parul, na? You Parul Dhal? Yes, I'm Parul Thal. Okay, Parul. I just I got your number. I got your number. Yes. okay, great. Oh, Asha, you can unmute yourself. Hi, ma'am. Good afternoon. Actually, I'm new to stock market, and I don't have any knowledge of stock market. You can say that I don't know the ABC of stock market. Basically, I am a housewife right now. So, what do you advise for me? Like how and where to start in this field? For housewife, this is the best profession. You can stay at home and you can work for yourself. And nowadays, to create your identity, it is very important for a housewife also to have some profession. And this is the easiest what you can do. So I would really recommend for you, because for me also, to manage my work life and my house life, it is so easy to have this kind of profession. So I would suggest you to go through this course, and it is going to help you a lot. Okay, from Parul ma'am has shown me few courses. So which course do you advise for me as a beginner? There are so many courses now. You should So start there are from not so many questions. Sorry to interrupt you here. That is a one program wherein we have different modules. If you go one by one, then the fees would be very high. But if you go for, the complete package, like 3-in-1 program or 4-in-1 program, then the fees would be, you will be getting discount. As it is, as I told you that, for first 10 students, whoever, that is first come first basis, whoever enroll first, they will get discount. So for, if you go for complete, the package would be, that is around 42 something. But right now you will only get that complete program by at 30,000. So you have that benefit of, getting that discount today. We have a offer today. So you can go ahead and enroll yourself. Still you have any doubt? Yeah, but I just want to ask, like you said, that is a complete module, right? Complete program. But Yes. it's not feasible for me right now to to go for complete module. So if I want to do separate modules, to start with, from which module should I start? Shall I have the, that PPT? Okay, sure. I'll share it again. Yes. This one? Is it there? Yes. Yes, Yes. So if you want to go for like stock markets and advanced derivative, that is 7,500. Then if you want to go for technical analysis advanced, that is 13,500. Then you want to go for technical analysis profession, then it is 11,250. So this is the 3 module. And if you want to, this is a 3-in-1 program, which is actually costing you 32,250. But honestly, I would recommend you to go for, complete thing, that 3-in-1 program, which is 22,500, not because I'm getting extra revenue, because you should have the knowledge. Shrestha, I hope you, agree with me that they should have knowledge about technical analysis, advanced and professional also, because it is interlinked. Yeah, everything is interlinked. So it would be Correct, better. true. Still further you want to go for further, what I can suggest you, if further you want to go for fundamental analysis, you can upgrade. But initially you want to, you should go for these 3 programs. And these 3 programs, if you go, that only cost you 22,500. So अगर हम 2 की cost भी include करते हैं तो भी 22,500 नहीं होती, तो आपको तीनों मिल जाएंगे, तीनों program modules मिल जाएंगे 22,500 में. So actually you will be saving money. Right? Yeah, I understand, ma'am. Yeah, and I understand, ma'am. But actually, what I'm asking was, like, you in this, you can see that there is stock markets and advanced derivative. What is the difference in these models? Because I do not know the ABC of the stock market. The things that has. So you want to know about the in-depth. Shrestha, can you explain them about stock market, advanced By that only, derivatives? then I can decide which module I want to go, or if I want to go for the whole combined thing. Because right now I am not able to go for a whole course, Okay. a whole module, three modules. So Okay. from beginning, from where do I start? Look, wait a minute. Can I just stop this?
Yes, yes, yes. I would personally recommend you, because as you are fresh, new to it, so I would recommend you to start from stock market and derivatives. Reason being, you should know what you are trading actually, right? And then you should go for technical analysis. That is must, because you should have tools. First of all, you need to know what is stock market actually, because you're fresh, and then you should know how to trade it. So learning technical analysis is also equally important, right? Okay. Yeah. All right, ma'am. Thank you. I That was hope it is what I clear wanted because to it know. is You can never Yeah. drive without learning driving. अगर आप गाड़ी चलाती हैं तो you must have learned driving ना, तभी तो आप रोड पे if you drive Yeah. car cycle whatever तो आपने सीखा होगा, तो बिना Yeah. सीखे आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको दोनों चीजें ही लर्न करनी जरूरी है. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank Okay, you. Ujjwal. And Asha, the best part is you just need to pay only the 10% of the fees amount. That is 22. If you want to go for 3-in-1, 2250. Rest we have easy installments also, EMIs option also, and then we have student loan also. In case, as you were telling me that you won't be able to pay the complete amount, you just need to pay 10% of the amount. Rest we have a loan facility. We have a tie-up with Propelled, wherein you just need to pay. There are no formalities as such formalities. You just need to, for KYC, you just need to pay, give your Aadhaar and PAN card, and then the bank statement. That's it. This is the all documents we required, and then your loan will be processed. So for that, there is only the document for documentation and all that purpose. You just need to pay 1,000 plus the GST amount for all the formality to processing your loan. That is a loan processing. Otherwise, you don't have to pay even a single penny for your loan. Usually what happens, we have to pay, something interest for our loans, but here you don't have to pay. We have a tie-up. We will be going to pay for on your behalf. So you don't have to worry about it. Okay, Asha, can we, Yes, I think Ujjwal also raise hand. Yeah. Yes, Ujjwal. So, ma'am, first of all, it was a completely a wonderful session. And Thank just you. I want to ask you one question. Like, as you rightly said, like this is the right time for all the students to invest into the market. So, what should be that ideal amount, like for especially for the students that they don't have any active or passive income base right now? What should be the amount? You are a student right now, Ujjwal? Ujjwal, are you a student right now? Can you hear me? Okay, so Ujjwal, if you're a student, I always recommend my students, the youngsters, I always tell them the way they get pocket money from their house, they should actually spend a little amount from their pocket money on their lifestyle, and rest should go into stock market. And once you start investing every month in stock market, you would actually compound your money in that. And for that, you should know how to and when to, by learning the charts, you should know how to invest and when to invest. So you should you should actually know what amount you should spend on your lifestyle, and the other amount should go into stock market. And this is how you can build up your portfolio, and after 15 years you would appreciate yourself only that you did the right thing by investing in the portfolio. तो थोड़ा 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 करके आप हर महीने आप अपना उसमें पुट कर सकते हैं. Okay, and you should actually do it, right? Okay, thank you. And Ujjwal is saying okay. Anyone else? Yes. Anyone else has queries? I think all their queries they are have been done. solved. In case they have any queries, they can call on the given number, that is 9711456906. You can call on this number to solve all your queries. In case you want to speak to Shrestha also, then we can also wait, Parul, someone has raised hands in chat box, and that is Chandra Prakash. Let me unmute him. Okay. Yes, you can ask your question, Chandra Prakash. Yes. My question is related to current scenario. What should be the best strategy for current scenario?
Best strategy for current scenario, I really can't recommend over here. For that, you have to learn the strategies first. Because I'm a student of Sharegurukul, Mhm. December batch. Okay. I have Okay, you just have. got the information from Ashok Jani sir. He told me that Mhm. we have a seminar, you just connect. So I just came here. I really can't answer this right now because many freshers are over here. For that, we can have a doubt session. Okay. Okay. Yeah. No, Yes. no problem. Chandra Prakash, we can have a doubt session and there you can, ask Shrestha regarding whatever doubts you have. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So Any we are other done. doubt? Gautam, I think you got your answer. You had asked me it works on crypto. Yes, it can. Wherever you have price and volume data, you can work on technical analysis. Okay. We are done with it. Yes, so we have, share the payment link in the chat box and the number. In case anyone has any kind of doubt, they can call on the number and they can also go directly and pay. And Shrestha, thank you so much for taking out time for us and guiding us how we can, stock market can be simplified. And you did a great job. So we learned a lot from you, and I think in future also we get to learn a lot from you. Yeah, So thank you're you so really an inspiration. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank Bye. you. Bye bye. Have a nice day. Thank you.